आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Just start it. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, and welcome back, Chemical Engineering Lab, CH22201. In previous lecture, we have learned basics of ANSYS Workbench, which is the approach of ANSYS software package. So basically, ANSYS package means we have discussed a little bit about the basics of ANSYS software package. So basically, ANSYS software package can be used for a number of applications, but in a present case, we will discuss modeling of a very simple flow problem, that is heat transfer modeling in a slab using ANSYS Fluent. This is a very robust and reliable and highly fidelity numerical technique to solve the heat transfer application. So in a previous lecture, means in first lecture, we have discussed a little bit about the CFD modeling steps. So what was those steps? Problem identification, pre-processing, solver, and post-processing. So to solve any problem in ANSYS Fluent, we have to follow these 4 steps. So our first step is problem identification. So here I try to define some basic information which is which will required to model this heat flow in a slab. So this is the problem statement. What is the problem statement? Problem statement is study of heat transfer in a slab. Slab, it means 3D object, and this is a 2D view, a 2D schematic diagram of slab. So study of heat transfer in a slab through conduction means here I define what is the mode of heat transfer we will consider to solve the heat flow problem in a slab. Means we are considering only conduction, heat transfer through the conduction. And whose end means the side of the slab is fixed at different constant temperature. Means this is a 2D view of a slab, and one side of this slab is fixed at constant temperature, that is 373 Kelvin, and the other sides means top, bottom, and the second side, opposite side of this 373 Kelvin is fixed at 273 Kelvin. Okay, and the parameters are, we fix the parameters 373 as I defined in next slide. Material of the slab is copper. Length of the slab is 20 meter. Width is 10 meter. And problem is conducting at steady state condition. Till this, any doubt? No, ma'am. No doubt. Okay. So what is the next step? Next step is pre-processing. Next means CFD modeling step. Second step is pre-processing, which is divided in 3 steps. That is, first one is geometry, second one is meshing, and third one is solver setting. So we will start with the geometry. So drawing a geometry using ANSYS Fluent, there is two possible methods.
First one is select toolbox, and first one is analysis. Select analysis system in toolbox and click on Fluid Flow Fluent. Once you click on it, you can see all CFD steps are listed, and you have to open it one by one. Means in as I told in previous slide, there are four steps: geometry meshing, sorry, three-step geometry meshing set, and setup. So these steps are already listed in this cell. There is another way that we call second method. Here we have to solve or model our problem step by step. Means first you have to choose geometry option, that is basically design modeler. You will choose this design modeler from the this component system. Once you choose it and create geometry, and when after successfully creating geometry, you will choose a second option, mesh, and then try to upload this generate created geometry in mesh shell. When you after generating mesh, you have to choose fluent option from this component system. Once you selected fluent option, try, and after this you have to upload mesh shell in fluent setup database. Okay, so actually as a beginner, I I would suggest you have to choose first one. Okay, but I would suggest after 2 to 3 problem, endeavor to be familiar with second one method, because actually this method have means several advantages. The basic advantage is to minimize the error uh, during calculation of the your equation, that is in this case energy equation. We will solve the energy equation using fluent. How it minimize above means error, how it works, I'll show practically in a coming lecture. So let's start with the creating geometry using design modeler. You have I'm following the second method. You have component system, you have selected geometry, that is basically design modeler. Once you click on it, you will see these cells will appear on your screen. Here you have to edit this geometry option, because means if you are working with a different kind of geometry and you will choose this cell, you will confuse. Means it should have some name, so easily you can open it. So first you have to change this geometry with the name of your project work. So in this case, we are going to create a geometry that is slab. So I have edited it with the name of slab. Okay. After editing, you have to click this option where the question here you can easily see the question mark. That question mark with the blue color shows that your geometry means your design modeler is ready to use. Now you can open it and uh, feed the data as per your requirement. Once you click on that geometry option, you can see this design modeler window appears. You should so now you can choose uh, the tools unit and set the units. Means
at what kind of system you want to work, means MKS system or other CGS system, other. So at use, if means in this case I have chosen MKS system, means the length is decided in the term of meters. So once you click on units, you can, I can show you, means once you will click on unit, you can see here a number of option is available in drop down menu. So in present case I have selected meter option, because in a problem identification I have already decided we have a length and width in term of meter. So here I have selected meter. Okay. One thing I want to clear, in problem I have given the name of the geometry, that is slab, but we are going to work with the, or we can say we will start with the 2D system. So actually I have given that name slab because if you want to deal with the 2D system and the 3D system, so how you will work. So I just want to show how you can work with 2D system or 3D system. So let's start with the 2D system, and then I'll show how can you convert that 2D system into 3D system also. But here we will solve those numerical equation for the 2D system only. But I'll show if you want to work in future with the 3D system, so how can you generate those geometry in design modeler as well. So this is your design modeler, and we are going to work with the 2D system. Here number of planes available like XY plane, ZX, YZ plane, and in the graphic window you can see here in present time, here you are ready to draw geometry with the 3D dimension, 3D dimension. So we are going to work with the 2D geometry. So you have to select any one or any plane from these three options. So let's choose XY plane. Once you click on XY plane, this axis will look like this way, means X and the Y plane is generated in graphic window. Once you means once you click on XY plane, and if you are facing some kind of problem, means it will not look like this, then you have to click on this option. That is that option helps to create a XY plane according to your graphic window. Okay. Once you click on it, you have before going to create a geometry, always try to remember, just try to grid, means try to grid on or snap option check in, because these options generate grid lines in graphic window, and it helps to in drawing a geometry. So it will minimize error during drawing of drawing of a geometry in any kind of plane, means XY plane or YZ and ZX plane. One use grid on these options. You have to move on draw option, because your geometry, that is slab, which is a look, I mean that schematic, if you will see that schematic diagram, it will look like a rectangle. So we will click on draw option, and we'll try to choose rectangle. But once you click on rectangle option, you have to drag it on in graphic section, means if you want to draw any rectangle. So let me show you.
like this. If you selected rectangle option and you want to draw it, means it is not necessary you have decided the length of this of a rectangle and the width is this. You have to just draw your rectangle and we will set the dimension as per our requirement in a next step. So just like I want to draw a rectangle around the this center, so just you have to put your pencil here and drag your mouse. Okay, it's not working. Actually net is on, so it's creating problem. Actually net is on, so it's creating some kind of problem, so I'm trying to draw it in save file. Okay, so like you want to draw your rectangle, just click your put your pencil at any point in the xy plane and drag in any direction. You can see your sketch is created, that is a rectangle. Okay, in next step what you have to do, like you have drawn your rectangle in xy plane. Once you have drawn it, in next step you have to give it give the dimension of this rectangle, means what is the side, what is the width. So you have to click on the dimension option and choose the length or the distance. Means for the general case, means you have no idea which is length and which is width, then you will choose length and distance option. Otherwise, if you are decided, means you have exact knowledge, means it is your horizontal side and this is your vertical side, then in that case you will choose a horizontal option to define the horizontal length, that is width, and vertical length. Otherwise you will choose general option, that is length. So click on length and distance option and after that put your mouse at the vertices of this rectangle and drag this line in any direction. If you will drag this line and in any direction, you will you will see a design modeler automatically give one name, that is L1. Similarly, you have to you have to give the dimension name for the vertical length, that is L2. Once you will give the name L1, once you give the dimension of the rectangle, you will see at the left of the detail view, it will give the information uh, that is 30 meter and 20 meter. But in our case, we have already decided in problem identification, we have required uh, length is 20 meter and the width is 10 meter. So in that case, we have edited those values and give uh, feed those value what is necessary for our मैम system. ये Means L1 जो है वो लेंथ है या फिर width? actually we have chosen a general case. Okay, so doesn't matter. देखो हमारे प्रॉब्लम में जो है वो हमने क्या किया, L2 जो है वो हमने कंसीडर किया है कि वो लेंथ है, ठीक है, और विद क्या है 10 है.
मैम मतलब कोई भी कैसे भी चूज कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ, L1 विड्थ होगा या फिर L2 विड्थ नहीं होगा। नहीं नहीं, बट इन जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो किया है कि ये इट इज योर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ऑप्शन. इफ यू विल चूज these two option, in that case it is compulsory. You have to decide that is your width, that is your length. Okay. अगर ये लेंथ एंड ये डिस्टेंस ऑप्शन अगर आप चूज कर रहे हैं डायमेंशन ऑप्शन में, देन नो इश्यू कि आपका लेंथ क्या है. ये डिजाइन मॉडलर खुद में फीड नहीं करेगा कि आपका लेंथ और ये विड्थ है. बट अगर आपने हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल चूज कर लिया तो डिजाइन मॉडलर ये डेटा सेव कर लेगा कि ये आपका लेंथ है और ये विड्थ है, और ये डेटा, ये सेम डेटा आपका नेक्स्ट स्टेप में पास कर देगा. अच्छा, वर्टिकल वाला लेंथ ही कंसीडर करेंगे ना मैम? हाँ हाँ. हाँ, ओके। Okay. So we have given the values of the length and the width. Once you have given these values, you can check. You have only one sketch. Till now, you have not generated any kind of body. Means till now you have not generated any slab. So you have one sketch without any bodies. So what we have to do to generate a body or to create a geometry, you have to click on the concept option. In concept menu you can see here is a number of option available. From means if you want to generate a line from a point, you can choose it from this drop down menu. And if you want to create any line from the sketch from, or you want to create any curve, 3D curve, there is a number of option available. But in our case we want to generate a 2D or a 2D geometry. So we have a sketch and we want to generate a surface, so we will choose this option, that is a generation of the surface using any sketch. Okay, once now you have to just click on it. Once you will choose this option, you can see surface sketch option is sketch one option is available. Sketch one represent you have one sketch, and yellow symbol shows till now we have not insert any sketch in this section to generate a surface. So what we have to do to generate a system, generate a surface, first you have to go in graphics window and click on this rectangle sketch. Once you click on this sketch, after that you have to apply it on this option. Okay, once you have applied this, or once you have clicked on apply option, you have to generate surface sketch one, because this symbol is still yellow. Once you generate this, once you click on this generate option, you can see your 2D geometry is generated. How it confirms? Because this green tick is present before the surface sketch 1, and here a message appeared that we have only one body with the one surface. It means one surface, one body. It means we have only 2D geometry with zero thickness. Means if you want to generate you want to convert 2D system to 3D system, what you have to do, you have to just click on the extrude option. Okay, I'll show you. Like this. So, generate.
Like you have this geometry that is a 2D rectangle, a plate look like a plate, and you want to extrude, means you want to convert this geometry into 3D, means like a slab. So you, what you have to do, you have just click on extrude option, and this is your extrude option, and this time it will ask, means here it is a geometry option. Okay, it is asking which means which geometry you want to convert into 3D, or you want to extrude, or you want to convert into slab. So means we want to convert this geometry into a slab. So to select a surface, you will choose this option, that is a face option. Click on face option and click the geometry. Once you click on the geometry, you have to apply the option, means you have selected, it will show one face, means it means that you have selected one face and you want to extrude this surface. Okay, normal means in which direction you want to extrude it, means we have xy plane, so we want to extrude in z direction. Okay, so we can choose normal option. Great. एक्चुअली सिस्टम रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है नेट की वजह से. ओके,
इंटरनेट चलने से इतना प्रॉब्लम आता है इसमें एनसिस में? एक्चुअली ये अगर आप लाइसेंस वर्क मतलब लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हैं देन नो इशू, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ओके, सो with lecture I think it is not possible to continue. Okay, so that's why I'm trying to explain all the step with the help of the PPT. So means you can see here is the extrude option. With the help of extrude option, you can convert those 2D geometry into 3D geometry. Otherwise, you have another option. Means like you have to just click on the surface option. And here I can show. You have a surface option, and here is the thickness. Once you want to convert this 2D geometry into 3D, then you have to just give the value, means up till what length you want to extend your thickness of this plate. So like if we means here I have given the value 100 meter, and after uh, editing this value we have to generate it मैम क्वेश्चन again. में तो ये वैल्यू नहीं दिया ना नहीं थिकनेस का? नहीं, I'm just trying to show how you convert these 2D geometry into 3D geometry. This is the only reason. ओके Okay, ओके. so once you have submit these value, means at every after every step you have to generate, means whenever you will edit in design modeler or meshing cell, or means after single kind of editing you have to generate to see the changes. Okay, so I have given the values and have generated, but it's not working because of this internet issue. So till now you have, means any kind of doubt, or if you want to any kind of question you may ask, because means we are going to deal with the 2D geometry, but just I have given the basic knowledge how you will convert those 2D geometry into 3D geometry. So you can see here you have one body with one surface, you have created 2D 2D kind, you can say 2D plate, means your 3D your slab is converted with zero thickness in 2D plate. So any kind of doubt do you have, मैम नो मैम. students? मैम आपने मतलब जैसे एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन और वाई जेड प्लेन, इनसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं मैम हम सरफेस, जैसे हाँ मीन्स अगर हम जैसे एक्सट्रूड ना अगर करना चाहें कि एक्सट्रूड करना ही पड़ेगा हमें? देखिए एक्स वाई प्लेन आप एक टाइम में एक ही प्लेन यूज कर सकते हैं. जैसे ये है आपके पास ऑप्शन एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, कोई एक ऐसा प्लेन जो है ये 3D व्यू दिख रहा है, पर एक टाइम में आप 3D प्लेन में कोई ज्योमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. तो आपको अल्टीमेटली 2D उसका मीन्स कोई भी, जैसे आपके पास कोई भी ज्योमेट्री है, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा कि अगर आप टॉप से देखें तो उसका सीमेटिक डायग्राम कैसा आता है. यस मैम. हाँ, तो वो आपका जो उसका बेस है सिमेट्रिक डायग्राम, वो यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, देन उसको आपको एक्सट्रूड करना होगा. ये तो सिंपल केस में है, ठीक. लेकिन अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री है जो कई पार्ट से मिलके बन सकती है, तो उस केस के लिए आपको ये करना है कि आपके पास एक्स वाई प्लेन है, उसका टॉप सेक्शन एक्स वाई प्लेन में बना दिया, उसको एक्सट्रूड कर दिया, वाई जेड प्लेन में दूसरा बना दिया. देन क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री है, फिर उन पार्ट्स को आप मर्ज कर सकते हैं. इसलिए आपके पास इतने इतने ऑप्शन है, एक्स वाई प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है. अदरवाइज अगर आपको 2D से ही वर्क करना था तो सिर्फ एक्स वाई प्लेन आप यूज करते और आप अपना काम कर सकते थे. बट आपके पास देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इसीलिए कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में वर्क करें
अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री बनाना चाहते हैं तो उन प्लेन्स में ड्रॉ करके एक साथ आप मर्ज कर सकते हैं, मैम ठीक है। हम हम प्लेन्स को मतलब 2D ज्योमेट्रीज को मर्ज करके वो नहीं बना सकते 3D ज्योमेट्री, जैसे एक्स वाई प्लेन में वो बना, लेकिन वो मतलब ऐसे हॉलो हो जाएगी वो अंदर से, ये हो सकता है। जैसे तो एक्स वाई अगर प्लेन में आप, एक हाँ फेस हाँ दिया, ऐसे जेड एक्स में एक, हाँ, और वाई जेड में तीसरा फेस, तो ऐसे करने से देखिए, हॉलो हो जाएगा वो। हाँ ठीक है, हॉलो हो जाएगा, आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ हॉलो ज्योमेट्री से काम करना है ना, तो आपके पास एक्स वाई प्लेन ही सफिशिएंट है। आप उसमें हॉलो ज्योमेट्री इजिली बना सकते हैं। डिजाइन मॉडलर मतलब आपको ये प्लेटफॉर्म देता है कि आप हॉलो ज्योमेट्री सिंगल प्लेन में आप बना सकते हैं, और उसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन में करके, तो वो अपने आप ही जेड मीन्स जैसे ये है आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अगर आपने यहाँ कुछ बनाया और अगर आप उसको एक्सट्रूड कर रहे हैं, इट मीन्स उसकी 3 डायमेंशन, एक्सट्रूड का मतलब ये है कि उसको यस उसकी थिकनेस लेना है, उसकी तीसरी डायमेंशन में उसको पुल करना, ठीक। यस मैम। तो इतना तो अगर आपके लेवल पे देखा जाए तो एक्स वाई प्लेन सफिशिएंट है, आपको 3 प्लेन में काम करके मर्ज करने की जरूरत नहीं आएगी। बेसिकली ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री के केस में होता है, ठीक। और मैम एक और था, मैम जैसे हमने हाँ, एक्स वाई प्लेन में रेक्टेंगल बनाया हमने, तो मैम हम्म, हमने रेक्टेंगल बना दिया है, तो फिर हमें सरफेस को स्केच करने की क्यों जरूरत पड़ती है? हमें सर्फ ये क्यों बताना पड़ता है कि सरफेस ये है? हाँ, तो ये मैं बता रही हूँ क्यों करना पड़ता है। देखिए, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मैंने शो भी किया है। आपने क्या किया है, आपने जस्ट पहले इन जो प्रीवियस स्लाइड में आपने क्या किया है, आपने जस्ट एक बाउंड्री ड्रॉ की है, ठीक। उस बाउंड्री में आप क्या मटेरियल फिल करेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा। मीन्स आपके पास बाउंड्री, आप या तो उसमें सॉलिड मटेरियल फिल कर सकते हैं या उसमें फ्लूइड फिल कर सकते हैं। अगर आप सॉलिड मीन्स लाइक हम यहाँ पे स्लैब या मेटल से डील कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सॉलिड सरफेस क्रिएट किया। इन केस अगर आपके पास एक पाइप है और आप उसमें फ्लूइड फ्लो से स्टडी मतलब वर्क करना चाहते हैं, देन उस केस में आपको क्या करना होगा, ये जो सॉलिड ऑप्शन है उस सॉलिड ऑप्शन को फ्लूइड से रिप्लेस करना होगा। इट मीन्स यू हैव अ बाउंड्री, मीन्स सेम केस है, सब कुछ है, सॉलिड बाउंड्री है, और उसमें क्या है, हमने अब फ्लूइड फिल कर दिया। वो किस टाइप का फ्लूइड है वो हम फ्लूइड में जाके सारा मतलब सॉल्व करेंगे, कि हमारे पास पहले प्रॉब्लम में था कॉपर, बट यहाँ पे हमने सॉलिड फिल कर दिया, यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया कि ये कॉपर है। ये सारी चीजें जो है ये सारा हम फ्लूइड में एडिट करते हैं, बस यहाँ पे हमें ज्योमेट्री से डील करना है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये देना है कि ये सॉलिड है कि फ्लूइड है। ओके, ओके मैम, थैंक यू। ओके, इसमें सो ये क्या, फ्लूइड ऑप्शन क्यों चूज किया हुआ है तो नहीं ये नहीं सॉलिड ना। नहीं मैंने चूज नहीं किया है, बस शो किया है आपको। तो यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक, इसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है ना। मैम हम्म, मैम ये मटेरियल कॉपर है ना, तो कॉपर तो हमने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया ना कि ये कॉपर है। सेम चीज मैंने अभी रिपीट की, जैसे कि अगर आपको जो भी मटेरियल या जो भी मॉडल आप यूज कर रहे हैं, कैसे आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, वो सब हम फ्लुएंट में जाके करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारा काम ये है कि डिजाइन मॉडलर में हमें जस्ट ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है और वो सॉलिड है या फ्लूइड बेस्ड है ये डिफाइन करना, और कुछ नहीं करना है, ठीक। और उसकी डायमेंशन देनी है। इवन हमने नेमिंग भी नहीं की है इसकी साइड्स की, कि साइड्स अगर ये है, टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, हमने कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं किया है, ठीक। ओके वो मैम। सब हम कमिंग स्टेप में करेंगे, बस यहाँ पे हमें ज्योमेट्री ड्रॉ करनी थी। ओके, क्लियर। यस मैम। ओके, सो automatically means once you generate the surface body, you will see you can see whether this solid geometry this surface is generated, whether it is solid
or it is full of fluid. Means to check the status of the material, you have to go detail view option and click on the fluid and the solid. If it is means we are going to work with the solid material. So if it is what happened means by default generally means design modeler has chosen so a solid option. So if it is a solid option, then well and good. If it is not, then you have to click on solid option to continue work with the our problem, that is slab. So I have selected solid option. After this, you have to save your geometry um, in your system, means like this way. I have saved my file in any of directory where space is sufficient. Once you can save your project with the name as you want to save, means in my case I have saved with the name that is slab. Okay, after saving this, you can see here a green tick appeared. That means your geometry in design modelers is successfully created. So now your geometry is ready to upload in mesh shell. So that is our second step of the pre-processing. So go to the component system and select the mesh option. Once you click on the mesh option, you can see this kind of shell will appear in your screen, and then you have to just upload this data, this geometry from the design modeler to the mesh shell. So how you will do it? You can do it this way. Like this is our workbench, and click on click on mesh option. So this is your mesh option. You want to upload this geometry in mesh shell. So click on geometry, click on design modeler of the geometry cell and try to drag it in design modeler of the mesh shell. Okay, so here you can see same sign is appeared in mesh shell, that is green tick. It means your geometry is successfully uploaded in mesh shell, and this symbol is appeared. It means your mesh is ready to use that geometry or this that geometry that is our plate. So before going to use mesh shell, you have this symbol shows you have to refresh or update mesh. Okay. I did this using ANSYS Workbench. You can see here green symbol is appeared. It means your mesh is ready to use. So now you click on the mesh option. Once you will click mesh option, you will see ANSYS ICEM window will appear in
your screen. So now click on the mesh option. Once you click on the mesh option, you will see ANSYS ICEM will by default will suggest a coarse mesh. Means it has divided your geometry in small pieces that we call mesh. So before going to meshing, we have to check some necessary some important parameters. That is means we are working with the CFD modeling system. So by default ANSYS ICM does mechanical options as a physics preference. So we have to change this mechanical option or with the CFD option. So select CFD option because we are working with the CFD modeling system. So once you click on the CFD modeling option, you have to generate mesh. Now your mesh is ready to use for the ANSYS CFD software package. So these mesh are coarse. So if mesh is coarse, that mesh will not provide good result because you can say if you are using the fine mesh means you have a this block you are doing meshing or you per length you have a 10 block means fluent means look when fluent what does the fluent sorry meshing uh, and in ANSYS ICEM it tried to solve the equation means when we will try to solve the equation in fluent. So this meshing is necessary to uh, what can I say means look this is your horizontal length of the slab. If per length you have a 10 blocks, okay, so in fluent those equation will be solved at these node points, okay. So it means we have 10 points. If we have 10 points and fluent will solve at these node points. So these space means these length of the slab will not be considered influent. So in that case we will try to convert this mesh into fine mesh because fluent it will provide the good result because means if nodes will come the closer, okay, means if this block is divided into 10 pieces and this block will come closer, so fluent will calculate at each point of the nodes, sorry, at each nodes of this block, so it will minimize the error of the energy uh, or calculate in case of like when in case we are calculating the temperature, so it will help to the calculate the temperature uh, at each point of this slab. मैम जब आपने इसको 3D में दिखाया था तब ये जो mesh size था ये काफ़ी बड़ा दिख रहा था, बट जैसे ही आपने इसको 2D में किया ये mesh size छोटा सा हो गया, मतलब कम हो गया काफ़ी. तो Okay, 2D this one आप yes इसकी बात कर रही हैं? yes मैम. No, both are same. Okay, actually 3D व्यू है तो इट्स मीन्स आपको उस तरह से दिख नहीं रहा होगा बट
अगर आप ये साइड व्यू है, अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो सेम मेश, क्योंकि नंबर ऑफ मेश जो है, नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है, वो चेंज नहीं होते व्यूज चेंज करने से। ओके। अच्छा ओके मैम। So how you can convert these coarse mesh to fine mesh? So there are several options to convert these coarse mesh to fine mesh. But one thing you have to remember: always try to from the basics, means we can say from like this. I can show, means this is your ANSYS ICEM. So this is your mesh, means if you click on it, you can see here there is a number of method to convert for the meshing. But you will always try to, if you have a means you have a very simple geometry, then there is no need to select these options: sizing, context sizing, refinement. They are means they are different kind of option you can choose for a different kind of geometry, means complicated, if you have complicated geometry or some kind of circular or round spherical, means this kind of geometry. Then, or if you want, you are dealing with the problem that is boundary layer problem, then you will choose refinement option and other option. Otherwise you don't have to need to go select these options: sizing, context sizing, refinement. You, means in our case we have a very simple problem, that is a plate. So we will just मैम किस change तरह के प्रॉब्लम में वो चीज़ें यूज़ करेंगे, साइजिंग, रिफाइनमेंट, ये सब कैसा like प्रॉब्लम होगा? insert option. Okay, once you want to work with the boundary layer problem. Okay, so those boundary layer problem you will study near the surface. Okay, like wall, near the wall or entrance. At that case you must have a very fine kind of sizing, means जैसे ये है आपका, ये आपकी प्लेट है। ओके, अभी आपको दिख रहा है? यस मैम। ओके, ये प्लेट है और यहाँ से अगर आपका फ्लूइड इंटर कर रहा है, ठीक, अभी 2D है, अगर हम इसको 3D समझ लें, ये एक पाइप है और यहाँ से आपका फ्लूइड इंटर कर रहा है। और एक तो यहाँ पे इंटरेस्ट इफेक्ट आपने पढ़ा ही होगा, जब पाइप फ्लो में फ्लूइड इंटर करता है तो इंटरेस्ट इफेक्ट, इट मीन्स ये जो आपका इंटरेस्ट है ये फ्लूइड को, फ्लूइड पे इम्पैक्ट डाल रहा है। इट मीन्स ये आपको, आप टोटली फोकस कर रहे हैं इंटरेस्ट पे, तो उस केस में आपको मेशिंग जो है बहुत ही फाइन होनी चाहिए, क्योंकि आप टोटली उस वक्त इस इंफ्लुएंस से डील कर रहे हैं। आपकी पूरी सरफेस की मेशिंग क्या है, कोर्स है, फाइन है, डजंट मैटर, बट यहाँ पे आपको फोकस करना होगा कि आपकी ये मेशिंग फाइन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के कांटेक्ट में आपका फ्लूइड आ रहा है। इन सेकेंड केस, इफ मतलब अगर आप ये फ्लूइड इंटरेस्ट पे डील नहीं करना चाहते हैं और आप ये फोकस कर रही हैं कि अगर फ्लूइड इंटर किया है और ये जो वॉल है, वॉल साइड से फ्लूइड का क्या इंटरेक्शन है, तो उस केस में आपको ये साइड की जो वॉल है वॉल मेशिंग करनी होगी। सो जहां पे आप फोकस कर रहे हैं वहां उस सरफेस की मेशिंग करनी होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम हीट फ्लो स्टडी करना चाहते हैं ये स्लैब में, तो इट मीन्स हमें इस पूरी सरफेस से डील करना है, तो इसलिए हम पूरी सरफेस की मेशिंग करेंगे। ओके, पहला रीजन ये, और दूसरा ये है हम कोर्स और सिंपल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री है, पहला ये रीजन। दूसरा ये है कि आपका सिस्टम, अगर आप बहुत फाइन मेश में जाएंगे और विदाउट एनी रीजन, आपको नीड भी नहीं है और आप उसमें जा रहे हैं, तो ये आपका सिस्टम मतलब पूरा पूरा प्रॉब्लम करेगा, हैंग कर जाएगा और अल्टीमेटली सिस्टम क्लोज हो जाएगा। ओके, तो मैम एक पर्टिकुलर जगह की मतलब हम मैशिंग अलग कर सकते हैं और दूसरी जगह
एक ही अलग, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ये आपको आईसीईएम जो है आंसर्स का, ये आपको सारी चीजों की फिजिबिलिटी देता है। मैशिंग मीन्स बहुत अच्छे लेवल की भी मैशिंग आंसर्स में की जा सकती है, जिसमें ये आईसीईएम ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं, जो उसी का पार्ट है, टूल है। वो बहुत अच्छे लेवल की मैशिंग देता है। आप किसी भी टाइप की ज्योमेट्री, इवन डिजाइन मॉडलर में ये प्रॉब्लम है कि आप कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आपको कैमलेट या कैड वगैरह यूज करके, सॉलिड वर्क यूज करके इंपोर्ट करना पड़ता है। बट आप इसमें किसी भी टाइप की, कितने भी हाई लेवल हाई क्वालिटी की मशीन आप यूज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, मतलब मैम जैसे आप पाइप का बता रहे थे, तो पाइप में अगर हम एंट्रेंस का देखेंगे तो हमें एंट्रेंस लेंथ तक कुछ अलग मैशिंग करना होगा और उसके आगे कुछ अलग, तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा ना मतलब? मीन्स आप किसी भी तरह से मशीन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। बस ये कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कब कहाँ पे किस चीज का यूज करना है। मीन्स यहाँ पे अब ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये क्योंकि हम ये जो ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग हमारा मेश जनरेट हुआ है। अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री है, देन उस केस में क्या होगा, आपके पास डिफरेंट मेशिंग ऑप्शन होते हैं। जैसे आपकी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री है, सर्कुलर है या स्क्वायर है, तो वहां पे ये ब्लॉक जो है टेट्राहेड्रल मेशिंग अलाउ नहीं करेगा, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। उस केस में आपको यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेशिंग चूज करना पड़ेगा। मीन्स हेक्सा, टेट्रा, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी ज्योमेट्री की, उस बेसिस पे आपको चूज करना होगा। ठीक, ओके। सो सिंपली कैसे आप चेंज कर सकते हैं, वो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। Means if you don't want to go with the mesh option, or you have a very simple geometry, in that case you have to just change the relevance and center of the relevance. Means center relevance, what does the relevance? Relevance generally gives the high quality of the resolution, and you can change the resolution on the basis, or you can say according to your system or computation power. So this is the relevance center. From here you can change the relevance center from the coarse to fine or the medium, depend on your requirement. Generally relevance center means number of the meshing, means per length how many number of the elements should be present. If you are going to deal with the fine mesh, it will increase the number of elements per unit length. Okay, so after clicking on the fine option, you have to click on the generate mesh. Once you click on the generate mesh, this kind of mesh status will appear. One thing I should remember, never try to stop this when meshing is going on, because it will corrupt total mesh file. In that case, you will have to recreate your meshing file. So once it will complete, then you will go to check the mesh, whether your mesh is generated or not. Otherwise, never try to stop it here. Okay, after that you can see here the green symbol is appeared. It means your mesh is successfully generated. From here you can see how many number of nodes or elements is present in the entire geometry. Means you can like that expand the sizing node by clicking the positive sign to the left of the this word sizing to the reveal additional sizing parameter. Then here you can see we have number of nodes 4140 and the element 4005. Always your number of nodes is always higher than the number of the elements. Once you have generated your mesh, now we will
try to rename of the sorry, we will try to naming of the sides or the surface of the given geometry. Like we have a plate, so we have only sides of that plate, means left side, right side, top side, and the bottom side. So we have to give only simple name. Means this is your left side, this is your right side, this is your top, this is bottom. Okay. So click on the geometry. Once you click on the geometry, you can see here create name selection option is present, because you are going to give the name of the sides of a 2D geometry, then you will select this option. If you will going to give a name of any surface, then you will select this option. Or if you want to give a single name of any body, then you, in that case, you will choose this option. So if you are dealing with the, we are dealing with the 2D geometry, then we will choose this option, and we will give the name. This is your left side, this is your top side, this is your bottom side. Here I will show you like this. Means here, this is your edge option. Click on it. Once you click and your, once you have chosen your top side, right click of your mouse. Here you can see create name selection option. Once you click create name of a selection option, this pop-up box will appear. Here you can edit the name, like this for your top, and click OK. So when you click, when you will choose click OK option, this name name of the top side will appear in the selection box. Okay. So this is the case that I have shown you. This is the case of 2D geometry. But in that, in means if you want to work with the 3D geometry or uh, with the slab, so in that case, what you will do, you will choose this option, and then they click on the surface of the slab, and then choose the name. So because we have 3D geometry, so we have to give name according to the surface. It means one side is wall, and if you will click on it, this is your left side. Or because we are dealing with the 3D geometry, you can give the name left. In that, if you are with, this is the only case of the solid. But if you are dealing with the fluid flow problem, in that case, you don't have to need the don't have to give the name that is left, right, top, and the bottom. In that case, in the fluid case, you have to just give the name that is because fluid is entering from this side or this side or this side. So in that case, like we like consider we are considering the fluid is entering from this side. So we have selected this surface and give the name inlet one, and okay, and these two surface is considered solid surface, and this is your outlet. One thing very important to remember, according to your according to the name that is that you have given in meshing ICEM, uh, it these name will create or we can say these name will create your geometry, basic geometry information in Fluent. So if you are giving your inlet or outlet, so
on the name of these words, Fluent will ask basic information like fluid velocity or the pressure drop, etc., etc. So always remember, means if you are working with the fluid system, then give these name. Otherwise, never try to give inlet outlet options in meshing section. So in our case, so we are working with the 2D system with solid material, so we don't have need this inlet outlet option. We have only required left, right, top, bottom option or naming of these sides. So here I have just given this name because I want to show how 3D geometry works. So once you will give the name, you have to save meshing also as you have saved your design modeler. Okay, so save your design modeler, sorry, your meshing. So here you can see once you save the meshing, here you can see a green tick again appear. It means your meshing is successfully completed. Now your मैम ये now एक ही जगह पे सेव होगा? क्या? एक ही जगह पे सेव होगा? No, means if you will save meshing, it won't ask again directory. Means you have already selected a directory for saving the design modeler. So you meshing won't ask. Okay, so mesh cell is ready to upload in setup. So now choose a Fluent option from the component system and say similarly as I have uploaded design modeler in mesh. In same manner, you have to upload those mesh in Fluent. Okay. Once you will upload your mesh in Fluent setup, mesh will ask to update. This yellow symbol means it required updation. Once you update mesh, then in next step you have to refresh setup option and click to open the Fluent window. Before once means when you will click Fluent option, Fluent launcher will appear. It will ask few basics information, that is precision processing option. So because we are working with one geometry at a time, so we don't need to go to select parallel option. Click on serial option, and to get the good result, click on the double precision option. Because we are working with the 2D option, and that is already defined in design modeler. So Fluent launcher means by default it consider we are working 2D, so we can't change this dimension option. After selecting these two options, click OK. Once you click OK, you will see some basic information will appear on your window. It means it shows like you are working 2D setup, laminar, because we don't have fluid flow. So by default, it considered we are working laminar fluid, pressure based solver. So what we will do in Fluent, we are not working with the fluid, so we will not select the models of the momentum, solving the momentum equation. We will deal with the only energy, solving energy equation. So click OK. So after clicking OK, you can see this is your Fluent window, and it is check option. Click on check option to check the whether your mesh is successfully uploaded in Fluent or not. Okay.
once you will click on check option, you can see several information will appear in this section, and your mesh will appear in this graphic window. Okay. Here you can see, as we consider in problem statement, we are dealing with the steady state flow problem. So we here it is not necessary to convert need to select this option, that is transient option. So by default it has chosen a steady state option, and 2D space, it means planar. We are working with the plane, and other complicated geometry or complicated option is not required. And we are not working with the gravity, so we are not to click or check in gravity option. Okay. Oh, इसमें वेलोसिटी का तो कुछ था ही नहीं ना, तो उसमें मतलब एब्सोल्यूट ये सब क्यों चूज किया? okay. ना ही Actually, प्रेशर बेस्ड, डेंसिटी बेस्ड, ये सब भी देखिए, कुछ ऐसा मेंशन नहीं था। हाँ, देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी इक्वेशन से डील कर रही हैं, तो इट डजेंट मीन कि फ्लुएंट अपने सारे ऑप्शन हाइड कर देगा, ऐसा नहीं करेगा। बस ये है कि वो आपको ये सारे ऑप्शन दे रहा है कि आप फ्लुएंट जनरली दो सॉल्वर बेस है, मींस प्रेशर बेस्ड सॉल्वर सॉल्व करता है इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन को, और डेंसिटी बेस्ड इक्वेशन सॉल्व करता है। ओके, लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी इक्वेशन, तो इन दैट केस वो ये कहेगा कि आप जो नेक्स्ट स्टेप में जाएं वहां से मॉडल चूज करें। अगर वो मॉडल आपने चूज कर लिया और वो टोटली एनर्जी बेस्ड है, देन वो इन सारी चीजों को जो बाय डिफॉल्ट सॉल्वर शो कर रहा है वो कंसीडर नहीं करेगा। ये तभी कंसीडर करेगा जब आप मोमेंटम इक्वेशन यूज करेंगे। आप एनर्जी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, एनर्जी इक्वेशन बेस्ड मॉडल चूज किया है, इट मींस वो इन दो पैरामीटर्स को कंसीडर करेगा। ओके, तो मतलब कोई इसमें से कोई भी ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें ना, अगर हम कोई भी चूज कर रहे हैं। अभी आप चेंज करने का कोई मतलब नहीं है ना, चाहे प्रेशर ले चाहे डेंसिटी ले, आप फ्लूइड से डील ही नहीं कर रहे, तो देन आपको कोई मतलब नहीं कि आप हाँ प्रेशर बेस से डेंसिटी बेस चेंज करने का कोई सेंस ही नहीं है। हाँ वही। ओके मैम। ओके, सो मैश चेक हो गया। So we are working with the modeling of heat flow in slab. So we only require to activate the energy equation. So in next step, you have to click model option. Once you click, there will be, here you can say there is a number of options. So multi-phase flow, energy flow, viscous, and several options. It means and radiation too. So we are working with the energy flow with conduction. So here radiation option is the radiation model is not useful for us, and multi-phase flow, because we are not working with the fluid flow, so this option is not no need of it. So we will choose only energy equation. So you have to click on it and activate it. Okay, once you will open this cell, you have to select and click on OK option. It means you have selected your model to solve your energy equation. Okay, now we have to define what kind of material we are going to work with, means we are going to use for our slab. Okay, so we are working with solid मैम and मैम white. मैम इसमें जैसे कि अगर हमारा कंडक्शन है स्लैब में, तो मतलब हमने एनर्जी इक्वेशन मतलब चूज कर लिया, तो हाँ ये कंडक्शन से ही होगा। बट अगर कुछ ऐसा केस होगा कि जैसे कन्वेक्शन है, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वेक्शन वाला केस हो जाएगा। No,
ऐसा नहीं है, आपको चूज करना पड़ेगा। फ्लुएंट में यही चीज है कि सारी आपकी जो आपकी मर्जी के हिसाब से ही वो सारी इक्वेशन सॉल्व करेगा। जो जो ऑप्शंस आपको चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना होगा। हाँ, सिलेक्शन तो आपका है। इसमें हमने ऐसा तो कहीं किया नहीं ना कि कंडक्शन है, तो कहीं कंडक्शन का तो ऑप्शन हमने दिया ही नहीं ऐसा। एक्चुअली एनर्जी इक्वेशन ऑन की है हमने, इट मीन्स कि हमें सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। अगर आपको कन्वेक्शन में जाना है तब आपको अदर इसमें ही, जैसे ये क्रिएट और एडिट, एक सेकेंड बैक, ठीक, ओके, आपने ये ऑप्शन यूज किया, देन आपको ये इसमें जो विस्कस मल्टीफेस, लैमिनार, नहीं नहीं सॉरी, मल्टीफेस में नहीं मल्टीफेस। जाना होगा। आपको लैमिनार जोन में जाना होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, अभी आप सिंगल फ्लूइड फ्लो की बात कर रहे हैं, कन्वेक्शन तभी होगा जब आप फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे। अगर आपने सिंगल फेस लिया है देन आपको क्या करना होगा, ये विस्कस लैमिनार और इसमें जो ऑप्शन है ये चूज करना पड़ेगा, इन्हें ऑन करना पड़ेगा और इसमें देखना होगा कि लैमिनार विद विस्कस फ्लूइड फ्लो और विदाउट विस्कस फ्लूइड फ्लो आपको वर्क करना है कि नहीं। मतलब मीन्स ये कि जैसी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें मॉडल सेलेक्ट करना होगा। ये ही मेन पार्ट है जहाँ पे आपको मीन्स अच्छे से सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कब कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा आपके सिस्टम के लिए, ठीक है। बट मैम अगर इसमें लैमिनार फ्लो नहीं है तो फिर कौन सा यूज करेंगे? लैमिनार फ्लो नहीं है तो आपको ये जाना पड़ेगा मल्टीफेस में ही, और फिर आपको सिंगल फेस से वर्क करना पड़ेगा और कन्वेक्शन ऑप्शन चूज करना पड़ेगा अलोंग विद सिंगल फेस फ्लो और टर्बुलेंस। देन उस केस में आपको रेनॉल्ड्स नंबर देना होगा, तब आपको ये नहीं होगा कि आप जैसे, मल्टीफेस में ना। हाँ, तब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल होंगे। जैसे उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फ्लुएंट आपको कौन कौन से मॉडल सजेस्ट करता है वो आप ड्रॉप डाउन मेनू में देख सकते हैं। यहाँ पे लाइक दिस इज योर फ्लुएंट एंड these are your models, multi-phase and okay, so मीन्स अगर आप उन एनर्जी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज उस केस में आपके पास सिंगल एनर्जी इक्वेशन नहीं होगी, तो उस केस में आपको पैरेलल इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्या करना है, उससे भी पहले आपको ये मॉडल सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि मीन्स आप आइलेरियन से जाना चाहते हैं या फिर मिक्सिंग हो रही है या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लेना चाहते हैं, ठीक। इन सब को चूज करने के बाद फिर आप फर्दर ये आपको अलाउ करेगा कि आप कन्विक्शन में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, कि सिंपल है और हीट एक्सचेंजर सिस्टम है कि नॉर्मल सिस्टम है। काफी मीन्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके मैम एक बार मैम विस्कस लैमिनार के ऑप्शन एक बार दिखाएंगे उसमें? देखिए यहाँ पे है आपके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, के एप्सिलॉन, ओके, ओमेगा, इन सब की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप कभी नहीं यूज करेंगे। मीन्स अगर आप ये देखिए विस्कस मॉडल है, लेकिन अगर आप वर्क करना चाहते हैं हीट फ्लो और वो विस्कस फ्लूइड नहीं है तो आप ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। ओके अच्छा, ओके मैम। और कुछ? नो मैम। ओके, so we have enabled heat transfer by activating energy equation. Okay. In next step, set up the material for your CFD simulation using the material group of setting up physics ribbon tab. Okay. Create a new material means by default fluid suggested fluid considered your material is aluminum. But if you want to change your material, then in that case, create a new material that is, for our case, we called it copper. So what you have to do, you have to just click on material
Okay, and we are working with the solid. Then click solid option. Here already, because I have already created copper, but you want to replace it with we can choose different material like, okay, means copper is already generated, but means if we want to change it with the like uh, copper, wait a second, we are working with the solid, so first we have to select solid and go to Flint database. Okay, and in Flint database you have to choose solid option, and from this list that is suggested by the Flint, from here you can choose any of it, like I have chosen steel. Once you selected steel, then click after this, automatically all the properties of the this steel is appeared. Now click on copy and close it. After this you have to click on the change and create option. Okay, now close. Here you can see your new material is listed in the table. So from here you can choose it for your working system, like we want to work with the steel, so we can choose steel, or if you want to work with the copper, then you can select the copper option. Okay, so मैम वो थर्मल कंडक्टिविटी ये सब चीज़ें और स्पेसिफिक हीट सब अपने आप ले लेगा ना फिर हाँ हाँ मटेरियल। बाय डिफॉल्ट, बट इन केस आप कोई न्यू मटेरियल उसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं जो उसमें लिस्टेड नहीं है, तब आपको सारी प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी और क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, ओके मैम। ओके, और क्या, बाउंड्री कंडीशन। ओके, in next step we will define the other parameters like temperature condition of the different sites. So in next step, in setting up physics tab, click boundary condition. This opens the boundary task page. Set the boundary condition um, at the left and right. Okay, so for our case we have considered the side of the different name, like bottom, top, right, left. So we know the left wall temperature is 373 Kelvin and the other sides are stable at 273 Kelvin. So let's start with the bottom side. So in boundary condition and bottom side, click edit option. After editing clicking it, you will see this window and go to because we are not working with the momentum equation, so you have to choose thermal option. Once you click thermal option, we don't this option will appear, means this temperature and heat generation rate and option will appear. So because there in our problem there is a no heat flux or heat generation is there, so we have to edit only temperature conditions, means bottom is fixed at what temperature, that is 273 Kelvin, and here no convection, no radiation is
uh, value is present in our problem, so we don't have to select these option. Convection radiation means no, we have to change only temperature option. So, and for the left wall side, we have to edit the temperature with the 373 Kelvin. For the other side, we will enter the value that is 273 Kelvin. Okay. So after मैम में giving एक इंटीरियर सरफेस वाला ऑप्शन भी था, तो मैम उसमें mm-hmm. में क्या मेंशन करें? Actually, बाय डिफॉल्ट जो फ्लुएंट है वो कंसीडर कर लेता है कि जो भी आपकी ज्योमेट्री है उसका इंटीरियर सरफेस है, तो वो ऑलरेडी हमने सॉलिड दे दिया है और मटेरियल उसका डिफाइंड है, तो हमें उसमें एडिट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ही हमें आइसोथर्म्स जो टेम्परेचर ट्रांसफर हो रहा है या फिर उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है ना, उसी को तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है उसमें। ओके, तो हमें उसमें एडिट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके मैम। ठीक, now come to the solution steps. So we have given all the values, parameters that we have already known. Now we have to select the methods to solve those energy equations. So once you will click solution methods, here you can see there is a number of scheme or a special discretization scheme is available that is asking what method you want to choose to solve your equation. So we have only energy equation. We don't have any momentum equation or pressure equation, then we don't need to change these momentum, second order upwind scheme, and the pressure solution scheme, and the grade means we have to only change the, or if you want to change in any kind of model, then we will change in only second order, means in energy equation, energy solving equation scheme. So here like this is your solution methods. Okay. मैम ये है क्या चीज़ मैम, सेकंड ऑर्डर अपग्रेड ये सब चीज़? Actually, to get the information means about second order of wind and the power law quick. These are the scheme generally we are using to solve the those energy equation or the momentum equation. But I think before this uh, मैम ऐसा you मैम have थ्योरी भी तो नहीं पढ़ते? एक्चुअली इन सबको आपको समझने के लिए आपको थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ओके, दिक्कत ये सारे मेथड्स हैं कि आपको नोट्स पे इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमने मेश क्रिएट की थी उस पे हमने ये कहा कि एंसिस फ्लुएंट फाइनाइट वॉल्यूम मेथड यूज करता है और उस पे नोडल कैलकुलेशन चलती है। तो अगर आप उन नोट्स पे वो इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, क्योंकि उनको सॉल्व करने के लिए बहुत मेथड है। तो ये जिन्हें हम स्कीम कहते हैं, तो इनके लिए कब कौन सी फर्स्ट ऑर्डर अपविंड यूज करना है, कब सेकेंड ऑर्डर अपविंड। एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर अपविंड जनरली मोमेंटम एंड एनर्जी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटर मानी जाती है, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और क्विक हम बहुत रेयर केसेस में यूज करते हैं। तो कब ये यूज करते हैं, कब ये नहीं करते हैं, इनके लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप मतलब ठीक से इसे चीजों को समझना चाहते हैं कि कब हम क्यों यूज कर रहे हैं, देन उस केस में आपको थोड़ा मतलब थ्योरेटिकल वर्क करना पड़ेगा। मैम ये नोट पे सॉल्व करने के लिए है ना मेथड्स? नोट पे हेलो मैम।
हेलो मैम। उसका नेट चला गया शायद। अच्छा, हेलो। यस मैम, अब आ रही है आपकी यस आवाज। मैम। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी आपसे, मीन्स अगर आपको अच्छे से ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि कब हमें कौन से मॉडल को सॉल्व करने के लिए क्या इक्वेशन चाहिए, सॉरी कौन सी स्कीम यूज करनी है, देन उस केस में आपको इसकी इन स्कीम्स के बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए। जनरली हम सेकेंड ऑर्डर अपविंड यूज करते हैं किसी भी मोमेंटम और एनर्जी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं है। बाउंड्री कंडीशंस जैसे सॉरी बाउंड्री फ्लो के लिए अगर आपको स्टडी करना है या फिर मिक्स फ्लो के लिए करना है, तब हम कौन सी स्कीम यूज करेंगे, तब वो आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा आप थियोरेटिकल वर्क करें। ओके। मैम ये नोट पे सॉल्व करने का है ना, मतलब मेथड? क्या नोट, एक पर्टिकुलर नोट पे सॉल्व करने का ही मेथड है ना ये जो है? पर्टिकुलर नोट पे, हाँ, मींस फाइनाइट वॉल्यूम मेथड के केस में आप कौन कौन सी स्कीम यूज कर सकते हैं उनके लिए ये है, ठीक। ओके, so now come to the solution methods. So for our case I have selected second order upwind scheme to solve the energy equation. Okay, this is the important for solving your energy equation, that is residuals. Basically residuals gives the limit up to, means suppose we are using numerical method to solve the energy equation, ठीक। And we have a temperature, left wall side temperature is 373 Kelvin, but once this CFD try to solve this equation, there is always some kind of error. Means it will never reach to the value that is 373 Kelvin. So in that case, we have to give the limit up to what means value or what difference we will allow to calculate the, means up to what limit we will allow to calculate the equation by the fluid. Okay, is this clear or not? एक बार दोबारा बोल दीजिए, एक बार। लाइक ऐसे कह सकते हैं, देखिए मीन्स अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है किसी वॉल का, ठीक, और अपोजिट साइड हमारा 273 है और एक साइड 373 है, और ये इक्वेशन जब फ्लूइड सॉल्व करता है तो ये एग्जैक्ट लिमिट 373 स्टार्ट तो करेगा, लेकिन 273 अपोजिट साइड जो है वहां तक वो नहीं ले जा पाएगा। इट मीन्स हमेशा एक एरर रहेगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये एरर जो है मिनिमाइज हो सके, मीन्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो, मीन्स नहीं कह सकते कि अराउंड ये वैल्यू उसने अचीव कर ली है दूसरे एंड पे या नहीं की है। तो वो जो एरर है उसको हम अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं तो कितनी वैल्यू, मतलब कितने डिफरेंस तक मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ये लिमिट हमें यहाँ पे देनी होती है। सो हम एनर्जी इक्वेशन से अगर हम वर्क कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट तो ये वैल्यू आती है 10⁻⁻⁶ तक कंसीडर करता है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे सिस्टम पे वर्क करना है और आप वहां चाहते हैं कि एरर एकदम नेग्लिजिबल हो जाए, तो आप इस पावर को, ये डिफरेंस है, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम।
और मैम ये एक्स वाई का हमें खुद सेट करना पड़ेगा? ना आप अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन या फिर आप मोमेंटम इक्वेशन जो है आपकी नेबर स्टोक इक्वेशन उनके साथ वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उन फ्लूइड के साथ वर्क कर रहे हैं देन आपको ये जरूरत होगी कि इन वैल्यूज को भी चेंज करें, अगर आपका सिस्टम बहुत सिंपल नहीं है तो। अदरवाइज आप डिफॉल्ट वैल्यू से ही, देखिए एक चीज है, हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू से ही स्टार्ट करिएगा। एक कैलकुलेशन जब रन हो जाएगी उसके बाद ही डिफॉल्ट वैल्यू को एडिट करिएगा। कभी भी अपनी ही वैल्यूज पहले ही नहीं फ्लुएंट को देनी होती। फ्लुएंट की डिफॉल्ट वैल्यूज जनरली कोशिश करें कि वहां पे डिस्टर्ब ना करें। मॉडल चूज करना अलग बात है, लेकिन ये जो लिमिट्स दी होती है वहां पे आप एक जो राउंड कैलकुलेशन है वो रन करा ले। जब वो हो जाए उसके बाद आपको अगर चेंज करना ही है तो तब आप चेंज करेंगे। फर्स्ट रन में चेंज कुछ भी नहीं करेंगे रेजिडुअल वैल्यूज में, ठीक है। ओके मैम। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मतलब आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा स्मूथ कर देंगे, वरना आप सब कुछ ठीक करेंगे और उसके बाद भी आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। ये चीजें कुछ चाहे आप नोट करें कुछ भी करें, याद रखिएगा। ओके, सो we have very simple geometry, so we are not going to work with the hybrid initialization. We will start with the standard initialization from your left side because that side is on higher temperature. So we are giving instruction to the plane, start computation calculation from left side of the slab, and initialization method should be standard initialization. We are not working with the fluid flow system, so we don't have to give the value of the pressure or x y velocity. We by default it will took the temperature of your left side wall. And now after giving these instruction to the plane, just click on the initialize step. Once you click on the initialize step, it will start Fluent will start to solve the equation from your left side of the wall, left side of the slab. Okay. It is also a necessary step. Generally, by मैम लास्ट स्लाइड का जाइए जरा, वो इनिशियल वैल्यू में मैम 373 केल्विन क्यों है जबकि हमारे इनिशियल 273 थी? इनिशियल हमारा 373 है लेफ्ट साइड वॉल। ओके मैम, 273 राइट साइड है। ओके ठीक है। हाँ, राइट साइड मींस रिमेनिंग साइड्स जो है आपकी वो 273 पे है। ओके ओके, सो it is one of the most important step. Means like if your system is calculating or your means Flint is solving those energy equations, and anyhow your system will stop or battery is discharged. In that case your data will be totally lost. So you have to choose this option. Means by default Flint has chosen 0, but you have to give some value. That means Flint will save your data after few iterations. Mean after solving some step of the equations, means you that called iteration. After solving means equation, it will Flint will save your data. So when you will face any kind of problem in your system, your data will not loss. Okay, here you have to give some मैम values. आइट्रेशंस मिनिमम मतलब कितना सेट करना चाहिए, जैसे आपने वहाँ पे 4 किया ना? Means try to save I think means I would suggest try to save after 1 to 2, means every iteration your data must have to save. Okay. ओके। Now it will ask number of iteration, means
or it may also ask number of steps too. So in this case, by default, Fluent is asking about the iterations. Means after suppose suppose Flint start solving the equation from the left side of the slab, and it will calculate the node which is nearest to the slab. Okay, then it, after solving or getting the temperature values at that node, this it will shift to the next node. After that next node, means once it will calculate from left side wall to the right side wall, it will come back again left side of the wall. Okay, until the residual values reach to its limits, that is 10 to the power minus 6. Is it clear? ये लेफ्ट साइड पे आने वाला आपने बात क्या बोला, मतलब जब उसका जो लिमिट होगा वो उतना पहुंच जाएगा, मतलब क्यों आएगा वो लेफ्ट साइड पे? Look, like it is your wish. ठीक है, ये आपका मैश है. ओके, ये आपका लेफ्ट साइड है. यहाँ से इसने स्टार्ट किया, देन ये फर्स्ट नोट पे इसने टेम्परेचर कैलकुलेट किया कि नियरेस्ट टू वॉल जो टेम्परेचर है ऑब्वियस है 373 से इसका वैल्यू कम होगा. देन इस पे, देन इस पे, देन इस पे. आइट्रेशन मीन्स हमने कहा कि 100 आइट्रेशन मीन्स यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और राइट साइड वॉल पे गया. तो फर्स्ट कैलकुलेशन में ये क्या करता है, क्योंकि हमने रेजिडुअल, बिकॉज ये न्यूमेरिकल मेथड है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू जो होनी चाहिए इस नोड पे वो ये नहीं शो करता है. सीएफडी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं वो शो करेगा. तो हम क्या चाहते हैं कि वो एरर मिनिमाइज हो सके, तो इसीलिए हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस देने पड़ते हैं कि वो लूप चले, यहाँ से जो कंप्लीट हो गया है फिर से वो इस पे आए, और फिर वो डिफरेंस जो इन दोनों के बीच डिफरेंस है, एक एरर होती है. आप जब पढ़ेंगे थ्योरी पार्ट तो उसमें आप चेक करेंगे कि जो इन दोनों में हमेशा वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू इस नोड पे आनी चाहिए वो उस पे वो ले जा सके. तो उस एरर को हम मिनिमाइज करने के लिए नंबर ऑफ आइट्रेशन कंटिन्यूस इंक्रीज करते हैं. ठीक. अच्छा, मतलब जितना आइट्रेशंस हम देंगे उतनी बार वो वापस आएगा. हाँ, लेकिन एक चीज ये है आपको हमेशा याद रखनी होगी कि कभी भी आप नंबर ऑफ आइट्रेशंस 1000 5000 ऐसे नहीं देंगे. ओके, हमेशा स्टार्ट करेंगे 50 और 100 से, मतलब लोअर वैल्यू से आपको स्टार्ट करना है. और इसकी भी अपनी लिमिट होती है, क्योंकि आपने एक सेट कर दिया है रेजिडुअल्स में कि इतने इतने एरर के बाद हमारा जो सिमुलेशन है वो स्टॉप हो जाना चाहिए. मींस हमें फिर फर्दर वो इम्प्रूवमेंट रिजल्ट में नहीं मिलेगा. तो आप 5000 दे देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है कि आप 5000 पे पहुंचा दिया, आपका सिस्टम में स्लो हो गया और आपके रिजल्ट्स वही आने हैं जो 500 आइट्रेशन के बाद आने हैं. तो आप एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करने का कोई सेंस नहीं है. ठीक, क्लियर है? यस मैम. ओके. और सेकंड ऑप्शन क्या है, आपको रिपोर्टिंग इंटरवल मेंशन करना रहता है. मींस आपने जो आइट्रेशंस दे तो दिए हैं, लेकिन वो कितने, वो सही कैलकुलेट इक्वेशन हो रही है कि नहीं हो रही, इक्वेशन कन्वर्ज होने के चांसेस है कि नहीं है, वो आपको देखना है. तो अगर आप रिपोर्टिंग इंटरवल कम मेंशन करेंगे तो हर सेकंड के बाद आपको वो रिजल्ट शो करेगा. तो आप एटलीस्ट वो रेजिडुअल्स चेक करके
ये गेस कर सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है वो कन्वर्ज होगी कि नहीं होगी, मीन्स सही डायरेक्शन में आपका जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो रिपोर्टिंग इंटरवल कोशिश करें बहुत ज्यादा नहीं देंगे आप, मतलब 2 to 3 4 ऐसे। अगर आपका नंबर ऑफ आइट्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है लाइक 1000, उस केस में आपको आइट्रेशन ज्यादा देना है 1000 5000, उस केस में आप इंटरवल हाँ ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि काफी गैप पे आपका अगर रिजल्ट आएगा तो तब आपको कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके आइट्रेशन भी है। ठीक है, ओके मैम। ओके। सो ये वैल्यूज अब आपने क्लिक कर ली, चूज कर लिए, तो आप कैलकुलेट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट अ सॉल्यूशन यूजिंग रन कैलकुलेशन इन the solution run. So it will ask again whether you want to initialize it or you want to continue from your previous calculation. So if you want to initialize again, then you have to go back solution initialization method and click initialize as I have discussed earlier in slides. If you want to continue, then click on yes option, then your calculation will start. Here you can see only a single line will appear your graphic windows. So these are the residuals. Residuals means your equation are calculating, and till now the value the error is reduced up to the value 10 to the power minus 6. Here in the iteration you can see you have only one line. It means Fluent is solving only energy equation. There is not continuity equation and the Navier-Stokes equation. Okay, once it reach to the it limits, that is residual limits, calculation will complete and the message will pop up in your screen, and then you have to click OK option. Okay, so from the result option you can see you can check whatever you want to see. Means in our case we are studying dealing with the energy equation, so we will check the temperature status at throughout the slab. In other case, if we are means suppose we are working with the fluid system, in that case we can see velocity profile and the pressure and so many things with the help of the graphics option. There is a uh, two way to check the result in Fluent. The first is this result that is associated with the Fluent, and the second, if you means in if you have a very complicated geometry, in that case you can uh, see your results in CFD post. Okay, so in our case we have very simple geometry, so we can see here our isotherm using the result bar. Okay, in result bar, result menu, click on the graphics and go to the select contour option. Under contour option, select temperature, because we are working with the energy equation. So we have to check isotherm. So click on the temperature equation, temperature option, and after that you have to choose where you want to see the change of the temperature. So we are interested to check the temperature in the entire body. So we have selected interior wall and then click compute. Once you click on the compute, contour will generate it, and click on the display option. Once you click on the display option, your contour will
will appear in this form. Okay. ये Any ऐसा doubt? कलर मतलब क्यों शो हो रहा है ये ऐसे डिफरेंट कलर्स? It means different colors. So wait a second. डिफरेंट कलर मीन्स ये आपको डेंसिटी शो कर रहा है. डेंसिटी मीन्स जो हीट जो है आपका टेम्परेचर है वो नियर द वॉल क्या है. रेड मीन्स ये है. रेड जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि रेड नियर द वॉल ये वैल्यू है. वैल्यूज यहाँ पर मेंशन है. ठीक है. तो रेड अगर है तो नियर द वॉल हायर टेम्परेचर है 373. ओके. और अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो वैसे ही आपकी वैल्यूज जो है डिक्रीज होती. तो किस ऑर्डर में वैल्यूज डिक्रीज हो रही है वो यहाँ पे आपका रेसिडुअल मेंशन है. ठीक है. तो ब्लू मीन्स 273 केल्विन है और जो रेड है वो ब्लू जो है आपका 273 है. नियर द टॉप एंड द बॉटम 273 केल्विन है. और ये जो है ये लेफ्ट साइड वॉल पे 373 केल्विन है. और ये जो है ऑरेंज ग्रीन रेड वो इन रेंज में लाई कर रहा है. तो कंट्योर मीन्स आप इस फॉर्म में आपका रिजल्ट आ रहा है. ठीक. अगर आप इस फॉर्म में इंटरेस्टेड नहीं है कि मुझे और भी चीजें चाहिए, हम हिस्टोग्राम में देखना चाहते हैं या फिर लाइन हमें हर नोड पे वैल्यू चाहिए तो वो किस फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं. उसमें भी इसमें भी ऑप्शन. लेकिन फ्लुएंट का ये एक इशू है कि ये बहुत डिटेल आपको वैल्यूज और या बहुत डिटेल में ग्राफ प्रोवाइड नहीं कर सकता है. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको रिजल्ट दैट इज CFD पोस्ट वो आपको लेना होगा, सिलेक्ट करना होगा और फिर वो सॉल्यूशन जो आपने सॉल्व किया है फ्लुएंट में वो इक्वेशन आपको यहाँ रिजल्ट में अपलोड करनी होगी. मीन्स अगर आपको डिटेल में रिजल्ट स्टडी करना है उस केस में आपको CFD पोस्ट में जाना पड़ेगा. ठीक. अभी क्लियर है? हाँ मैम थोड़ा थोड़ा क्लियर है. ओके. आप XY प्लॉट भी जनरेट कर सकते हैं. मीन्स हर नोड पॉइंट वैल्यूज के लिए ये भी जनरेट कर सकते हैं इंटायर द वॉल. और अगर आप हिस्टोग्राम के फॉर्म में भी स्टडी करना चाहते हैं कि मीन्स कहाँ पे क्या वैल्यू होगी, ये टेम्परेचर है और अगर ये आपकी लेंथ है तो कहाँ पे क्या वैल्यूज होगी, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज होगी, वो भी आप हिस्टोग्राम की फॉर्म में यहाँ से जनरेट करके चेक कर सकते हैं. ठीक. So same आपको करना है कि means you have to just go to select the histogram option and select the temperature option and then select the zone that is interior surface body and then click option compute and after that you have to just choose plot option to plot the histogram temperature graph. Okay. ओके मैम. So this is the simplest form of the CFD modeling using ANSYS Fluent. So means यहाँ तक अगर अभी भी जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं जो भी कुछ डिस्कस हुआ है वहां पे आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं. स्पर्श आपके अलावा और किसी को कुछ डाउट है? बाकी है भी कि नहीं है? मैम. यस मैम. यस मैम. डाउट नहीं है तो मीन्स समझ नहीं आया ऐसा कुछ? नहीं मैम बस एक बार आप करके देखेंगे तो फिर मैम. हाँ मैम वही है, एक बार करेंगे ना. प्लीज आप लोग करिएगा क्योंकि ये सबसे सिंपल है. अगर आप इसको भी नहीं करेंगे ना तो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा पाएंगे. ये हीट का सबसे सिंपल है. अभी हमने फ्लूइड कंसीडर ही नहीं किया है. ओके. ओके मैम. ओके मैम. ओके. ठीक है मैम. ओके.
So Hasan sir, I think so.